गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल अग्रवाल आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूँ। इन प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सरसाइज 1.1 and we have discussed question number 1, question number 2 and today we will start with question number 3. Okay, today we will start with question number 3. What is it? It is written and the function and the relation is defined by question number 3. Okay, this is and it is defined by check whether the relation are defined in the set. एक set आपको दे रखा है. Let us assume the given set is set A. The given set is set A, and it is and the elements of set A are 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and 6. 1, 2, 4, 5, 6. And the relation R is defined like A comma B. Relation R is defined by A comma B such that B equals to A plus 1. B equals to A plus 1. Okay, in question number 3, the set A is given by 1, 2, 3, 4, 5, 6 and the relation from A to A or in A is defined by A comma B such that B equals to A plus 1. We need to check that this relation is reflexive, symmetric or transitive. Okay, first solution. First we check for reflexive. Okay, for reflexive we know that. Okay, before checking it, first we define the relation R in the form in roster form. Okay, we define this relation R in roster form. For roster form we know that this relation is defined from A to A. What does it mean? It means that the domain of the function the relation R, domain of relation R is A. Domain of relation R is A. Then incoming element in this relation, relation is A, element of A, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. If we put A equals to 1, then we will get 2. If we put A equals to 2, we get 3. If we put 3, we get 4, and if we put 4, we get 5. Okay, or if we put 5, we get 6, or if we put 6, then we get 7, but 7 is not an element of set A. Thus we can't put A equals to 6. Okay, and the relation in roster form is defined like 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 and 5, 6. Okay, now we check that this the given relation is reflexive, symmetric or reflexive, symmetric, transitive or not. Okay, first we go for reflexive. For reflexive we know that 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 should be belongs to R, should belongs in R. Okay, but 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3 are not the elements of set or are not the element of relation R. What we write now? We write that 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6 are not elements of relation R, does not belongs to R, are not belongs to R. Thus, therefore F is not reflexive. F is not reflexive. F is not reflexive. Okay. Now we go for symmetricity. 1, 2 belongs to R. It means 2, 1 will also
be in R, but 1, 2 belongs to R, 2, 1 does not belongs to R. अगर 1, 2 1 is related with 2, then 2 will also be related with 1, should be related with 1, but 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R. Hence we can say the relation R is not symmetric. What we will write? We write like 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R. 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R. Therefore, F is not symmetric. F is not symmetric. F is not symmetric. Okay. Now we check the given relation is transitive or not. For checking this, we look in relation R. 1, 2 belongs to R, 2, 3 belongs to R, 1, 2 belongs to R, 2, 3 belongs to R. It means 1, 3 should be belongs in R, should belong in R. But 1, 3 does not belongs to R. Hence the given relation R is not a symmetric, is not a transitive relation. What we will write now? We will write that 1, 2 belongs to R and 2, 3 1, 2 belongs to R and 2, 3 belongs to R. But 1, 3 does not belongs to R, does not belongs to R. In transitive relation, we look that if A belongs to R, A, B belongs to R, B, C belongs to R, this implies A, C belongs to, this implies A, C belongs to R. But here A, C does not belongs to R, so we will say that this given relation is not a transitive relation. 1, 2 belongs to R, 2, 3 belongs to R, but 1, 3 does not belongs to R. Therefore, F is not transitive. F is not transitive. F is not transitive. Okay. I think question number 3 or 4. Okay, question number 3 is clear. Okay, now we go for question number, we move on question number 4. What is question number 4? Show that the relation R in R defined as R equals to A, B such that A is less than equals to B. The relation is defined by, the relation R is defined as A, B such that A is less than equals to B. The relation is defined by A is less than equals to B. What is the mean by A is less than equals to B? We know that this inequality can be true. Either less than is true or equals to is true. Okay. This inequality can be true for less than or equals to. Okay, here we see that for reflexive function we replace B with A. We replace B with A. We know that to find or to check a relation is reflexive or not, we replace B, we replace Y, we replace Q with A, X or P. Okay, here caution, two elements A and B are in R. Sorry, here two elements A and B are in R. So to check this relation is reflexive or not, we replace B with A. Here we replace with B with A and we get A is less than equals to A. Is it true or not? We know that A is not equals to A. A is not less than A. A is not less than A. A number is not less than itself. Then this inequality less than is not true, but A is equal to A. A is equal to A. So we will say the given relation for reflexive function is true. The given statement for reflexive function is true.
क्या कहा हमने, क्या सीख रखा है कि लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू में अगर एक भी, भले ही वो लेस देन हो भले ही वो इक्वल्स टू, अगर लेस देन ट्रू हो गया तब भी वो पूरी इनइक्वालिटी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और अगर इक्वल्स टू वाला सही हो गया तब भी हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू प्रूव हो जाएगी। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको अपने आप से लिखना है, बस आपको तो यहाँ पे देखना है। तो लेस देन के लिए आपके ये प्रूफ नहीं हो रहा है, लेकिन इक्वल्स टू के लिए सही है, मतलब दोनों में से एक सही है तब भी वो पूरा स्टेटमेंट क्या होता है आपके लिए, ट्रू होता है। तो यहाँ पर हमारे पास a इज लेस देन इक्वल्स टू a इज ट्रू, है ना। सो वी विल से द रिलेशन R इज a reflexive relation. Okay, for second, a is less than equals to b, this implies b is less than equals to a. Okay, a b से छोटा या बराबर है, a is less than equals to b, a b से या तो छोटा है या बराबर है, तो क्या b a से छोटा या बराबर होगा क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है। a b से छोटा है, a b से छोटा है तो क्या b a से छोटा होगा क्या, नहीं। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, आप ध्यान से देखें, है ना। a b से छोटा है तो आपको पता है b भी a से छोटा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता, इस इनइक्वालिटी को आप कई तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, या तो आप लेस देन के लिए लेके चले, पहले आप किसके लिए लेके चले, लेस देन के लिए। अगर आपने लिया a इज लेस देन b, तो उधर क्या आउटपुट हो सकता है, उधर आउटपुट हो सकता है या तो b इज लेस देन a और b इक्वल्स टू a, लेस देन इक्वल्स टू है ना, इसलिए। तो यहाँ पे हमने लेस देन लिया तो उधर क्या हो सकता है, a की जगह या तो लेस देन का होना चाहिए या इक्वल्स टू का होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम b को इक्वल लेते हैं तब भी वहां पे, यहाँ पे इक्वल्स टू, वहां पे दो रिलेशन वापस की, या तो क्या होना चाहिए, लेस देन ए होना चाहिए या इक्वल्स टू ए। तो क्या पूरा ये ट्रू है क्या, लेस देन वाला, ये यहाँ पे ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है ना। और अगर a लेस देन b है तो ये भी ट्रू नहीं है, b a के बराबर नहीं होगा। और फिर अगर हम इक्वल्स टू वाला साइन लेके, यहाँ पे हम दो साइन ले सकते हैं, या तो लेस देन वाला या इक्वल्स टू वाला, दोनों में से एक भी सही है तो हम बोलते हैं वो पूरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। लेकिन यहाँ पर हम लेस देन को अलग डिफाइन कर रहे हैं, इक्वल्स टू को, अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो हम कहेंगे हमारा जो पूरा स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो लेस देन के लिए अगर इधर मैं लेस देन लेता हूं तो उधर दो कंडीशन हो सकती है कि या तो लेस देन वाला या इक्वल्स टू वाला, और अगर मैं इक्वल्स टू यहाँ पे लेता हूं तो उधर वापस दो कंडीशन आपके पास आती है, कौन सी, एक तो लेस देन और एक इक्वल्स टू वाली, है ना। तो देखो अगर हमने लेस देन लिया तब भी ये स्टेटमेंट सही नहीं है, अगर इक्वल्स टू लिया तो ये भी सही नहीं, तो ये सही नहीं है, मतलब ना तो ये लेस देन के लिए सही है ना ये इक्वल्स टू के लिए सही है। इट मींस द रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, फॉर ट्रांजिटिविटी, ओके, look at both. A is less than equals to B and B is less than equals to C. This implies A is less than equals to C. Is it true or not? A B से छोटा है, B C से छोटा या बराबर है, तो क्या A C से छोटा या बराबर होगा क्या? Of course होगा, है ना। A जो है वो B से छोटा या बराबर है, B जो है वो C से छोटा या बराबर है, तो आपके पास A जो है वो भी C से छोटा या बराबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम कहेंगे हमारा जो गिवन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। It means the relation is reflexive or and transitive but not symmetric. Okay, this is our question number 4. Okay, now question number 5. Question number 5 is same as question number 3, is same as question number 2, so I hope that it can be done by yourself. Now question number 6. Okay, show that the relation R in the set, given set is set A. We suppose that the given set is set A and it is given by 1, 2, 3. It is given by 1, 2, 3, and the relation R is defined by 1, 2 and 2, 1. Relation R is defined by 1, 2 and 2, 1. It is defined by 1, 2 and 2, 1. Now we will show that this relation R is symmetric but neither reflexive nor transitive. Okay, look at both for solution.
solution. It is seen that we know that what we know that to prove a relation is reflexive or not, to prove that a relation is reflexive or not, each element of set A is related with itself. Each element of set A is related with itself. But here in relation R, we clearly we can say that 1, 1, 2, 2, 3, 3 are not present. The elements 1, 1, 2, 2, 3, 3 are not present in R, or we can say that are not elements of relation R. So it is seen that 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3 does not belongs to R. Therefore F is not reflexive. F is not reflexive. Okay. Second, for symmetricity of this relation, clearly we can see that 1, 2 belongs to R. This implies 2, 1 belongs to R. Agar 1 related with 2, then 2 will also be related, should be related with 1. Here easily we can say, clearly we can see that 1, 2 belongs to R and 2, 1 is also belongs to R. That is why this relation R is a symmetric relation. That is why, or therefore F is symmetric. Okay. For transitivity, 1 is related with 2, 2 is related with 1. Then for transitivity, 1 is related with 1, or 1 should be related with 1. But here 1 is not related with 1, so the relation R is not transitive. एक का 2 से रिलेशन है, 2 का 1 से है, तो 1 का भी 1 से होना चाहिए. 1 is related with 1, ऐसे ना, 1, 2, 2, 1. 1 is related with 2, 2 is related with 1. For transitivity 1 should be related with 1. 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 1 से है, तो 1 का 1 से होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R, but 1, 1 does not belongs to R. Therefore F is not transitive. F is not transitive. I think is it clear? It is clear to anyone. Question number 6. Okay, now question number 7. Show that the relation R in the set A of all the boys in library of a college given by R equals to x, y such that x and y have same number of pages. है ना. इस बार आपको रिलेशन कैसे डिफाइन है, x, y such that x and y have same pages, x and y have same pages. Okay, the relation is defined by x and y have the same number of pages. same number, मैंने नंबर नहीं लिखा, सेम पेजेस लिख दिया, सेम नंबर ऑफ पेजेस था. ठीक है, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, सेम नंबर ऑफ पेजेस. ओके, नाउ
we will show that this relation is an equivalence relation. Okay, for I think I not need to describe it on board, you can do it by yourself. Okay, let me define it verbally, है ना? Okay, easily we can say if x and y have same number of pages, then for reflexive function we replace y with x, then x and x, we replace y with x. So x and x have same number of pages. Is it true or not? This statement is absolutely true, because two same books, x and x, two same books have same number of pages in it. Okay, then x and x, 12th class mathematics books, mathematics book and 12th class mathematics book, both books have same number of pages in itself. Okay, here we can say x and x have same number of pages. That is why the given relation is a reflexive relation. For symmetricity, if x and y have same number of pages, then y and x have same number of pages or not? If x and y have same number of pages, अगर x और y में same number of pages है, तो क्या y और x में भी same number of pages रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे. इसका मतलब ये रिलेशन आपके पास कौन सा हो जाएगा? सिमेट्रिक भी हो जाएगा. ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिविटी, x and y have same number of pages, y and z have same number of pages, then this implies x and z have same number of pages. Is it true or not? Yes, it is true. That is why we will say that the relation R is reflexive, symmetric and transitive, or in other words we can say the relation R is an equivalence relation. The relation R is an equivalence relation. Okay, I think you can do it by yourself. Okay, now question number 8. Question number 8, show that the relation R in the set A 1, 2, 3, 4, 5, the given set A is given by A is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and the relation R is defined by A, B such that modulus of A minus B is even. Modulus A minus B is even. Okay, this question देखो अच्छे से देखना. क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा है उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं. मैं आपको इजीली बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना. या तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म के साथ डील कर ले इसको. तो मैं रोस्टर फॉर्म इसका लिख रहा हूँ, है ना. देखो इसका रोस्टर फॉर्म हम लिखते हैं बोर्ड पे. सोल्यूशन, जितना आपको क्वेश्चन में लिखना है सोल्यूशन यहीं से बोल देते हैं इसका सोल्यूशन. ओके, टू चेंज द गिवन रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, you can write here that on changing the given relation in roster form. Okay, changing the given relation in roster form, we get what we get. Okay, what is the relation? The relation is modulus A minus B is even. Modulus A minus B is is even. Look at board. From A to A, the relation is defined in A. The elements of A are 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, what is the relation? The relation is modulus A minus B is even. Okay, say mapping. Look, does 1 can be mapped? Does 1 mapped with 1? Does 1 map with 1? 1, if we map 1 with 1, what we will get? 1 minus 1. 1 minus 1, it is 0, and 0 is not an even number. But in this question, we include that 0 is an even number. Okay. Then 1, 1 is an element of relation R.
1 comma 2, 1 comma 2, what is 1 minus 2? 1 minus 2 is 1, 1 minus 2 is 1, and 1 is not an even number, that is why 1 will not be connected with 2. Okay, 1 can be connected with 3 or not? 1 can be related with 3 or not? We are defining here relation, not a function. Okay, 1 can be related with 3 or not? Yes. 1 minus 3 is 2, 1 minus 3 is 2, and 2 is an real number, sorry even number. आपको फंक्शन कैसे डिफाइन है कि आपको a और b दोनों किससे लेने हैं? a से लेने हैं, और कैसे लेने हैं कि उनका नेगेटिव जो है, उनका डिफरेंस जो है, उनका माइनस जो है वो क्या होना चाहिए? एक इवन नंबर होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम 1, 1 ले सकते हैं ना, 1, 1 कि 1 minus 1 0 and 0 is an even number. 1, 2 नहीं, 1 minus 2 is 1 and 1 is odd number. Okay, 1 minus 3 we get 2 and 2 is an even number. So 1, 3 will be an element of relation R. 1, 4 no, 1 minus 4 is 3 and 3 is not an even number. 1, 4 no, 1, 5 yes, 1, 5 is 4 and 4 is an even number. Okay, 1, 6 no, 1, 5 okay. Then 2, 1 no, 2, 1 2 minus 1 is 1 and 1 is not an even number. 2, 2 yes, 2, 2 is 0 because 2 minus 2 is 0. 2 minus 3 no, 2 minus 4 yes, 2 minus 4 is 2 and 2 is an even number. 2, 5 no, 2 minus 5 is 3 and 3 is an odd number. Okay, 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 को लेना है। 3 का 1 के साथ पेयर बनाएंगे, 3, 1 मतलब 3 माइनस, पेयर का मतलब कैसे बनाना है कि उनका मॉड्यूलस जो है वो इवन होना चाहिए। तो आप 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 3 minus 1 2 होता है, और 2 ये रियल नंबर है, इवन नंबर है, बिल्कुल है। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे? 3, 1 बनाएंगे आप। ओके, उसके अंदर 3, 2 नहीं, 3, 2 मतलब 3 minus 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे आपको 1 मिलेगा, और 1 क्या है? ऑड नंबर है, हमें इवन नंबर चाहिए। फिर 3, 3 मतलब 3 minus 3 is 0 and 0 is an even number. Okay, then 3, 4 no, 3, 4 is 1, 3, 5 is 2 yes, 3, 5 now 4, 1 no, 4, 2 yes, 4, 2 4, 3 no, 4, 4 yes, 4, 5 no, then 5 minus 1 yes, 5 minus 1 is 4 and 4 is an even number. 5 minus 2 no, 5 minus 3 yes it is, 5 minus 3 is 2 and 2 is an even number. 5 minus 4 and 5 minus 4, 5 minus 4 no, 5, 5 yes. Okay, these are the elements in relation R. These are the elements of relation R. The elements are 1, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 2, 2. You can clearly see that the difference between these two elements, the modulus of difference of these two elements is always an even number. So these elements are the elements of set R. Okay, इजीली है ना, इजी है ना, बिल्कुल। आपको क्या बोला गया था? आपको एक ए से ए में एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करना था, ए से ए में एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करना था जिनका जो आपके पास डिफरेंस है और डिफरेंस का जो मॉड्यूलस है वो आपके पास क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, क्या किया मैंने? ए में से उन एलिमेंट्स के मैंने पेयर बनाए जिनका डिफरेंस जो है वो हमें क्या मिल गया? एक इवन नंबर मिल गया। अब इसको देखकर आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले आप इसके लिए बताएंगे, सबके यू विल गो फॉर रिफ्लेक्सिविटी, है ना। सबसे पहले आप बताएंगे रिफ्लेक्सिव फंक्शन के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या बताएंगे? 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 sorry 5, 5 are element of set R, sorry are element of relation R. Thus we will say that relation R is a reflexive relation. Okay, after it we will go for symmetricity of this function.
Okay, for symmetricity, here we see that 1 comma 3 belongs to R. It means 1 comma 3 belongs to R, and 3 comma if 1 comma 3 belongs to R, then 3 comma 1 also belongs to R. 1 comma 5 belongs to R, 5 comma 1 also belongs to R. 2 comma 4 belongs to R, 4 comma 2 also belongs to R. 3 comma 1 belongs to R, 1 comma 3 belongs to R. 3 comma 5 belongs to R, 5 comma 3 belongs to R. A is related with B, then B is related with A, है ना? ऐसा हो रहा है सब में, तो आप लिख देंगे 1 comma 3 belongs to R. This implies 3 comma 1 belongs to R. 2 comma 4 belongs to R. This implies 4 comma 2 belongs to R. 3 comma 5 belongs to R. This